Hello guys, welcome back to SportsKhabri, Curious Harry, Arunava, Foot and Arun Foot, sorry, and Sayan Food and Football. Again, we are back to discuss the ISL match and big match tomorrow. Obviously, FC Goa versus Kerala Blasters sold out, and today also नॉट दैट यू कैन से कि मतलब हैदराबाद एफसी वर्सेस मोहन बगान इतना ज्यादा हाइप्ड अप होता, लेकिन जिस तरह से मोहन बगान एएफसी कप में मैच हारी, उसके बाद इस मैच का जो क्या बोलते हाइप है वो बन चुका था कि किस तरह से मोहन बगान यहाँ पे आईएसएल में खेलती है। सो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। सो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। हेलो सर, हाउ आर यू एंड व्हाट्स योर फर्स्ट थॉट अबाउट द मैच? Good evening, Hiren. Good evening, everybody else who's watching. Welcome back to our broadcast. Only us two today, so we try and keep you entertained and informed. Interesting game. Injury time to chal raha hai. 1-0 Mohun Bagan. Brandon Hamill has scored the goal in the 85th minute. I feel could have received a red card just a couple of minutes back for his push on Joao Victor, but the referee only gave him a yellow. So good to get away, but otherwise, I think very important for Mohun Bagan Super Giant to win this game. Jaise ho, jeetna hai, so to say, right? So this is, I think, for them the most important thing today. After that humiliating loss against Odisha FC in the AFC Cup and the elimination from the AFC Cup, today is it just about winning. It's not the best of games. They had more of the chances, but still Hyderabad did have their moments. So, in the end, if they win it, yeah, it's okay. Forget it. Take the 3 points. And what also is a fact is Mohun Bagan then 5 matches, 5 wins in the ISL. आई थिंक वो काफी सारे लोग, मतलब जैसे ही वो एएफसी कप का लॉस आया, आई थिंक वो काफी सारे लोग भूल गए कि मतलब नो डाउट इंजरी से स्ट्रगल कर रहे, देयर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आर मिसिंग। बट अब देखिए आईएसएल में दे हैव बीन, मतलब क्या बोलते कि जिस तरह से उन्होंने खेला है, अच्छा फुटबॉल खेला है मेरे हिसाब से। और वो उनके क्या बोलते कि टेबल पे भी दिखाते हैं या फिर उनके रिजल्ट पे भी दिखाता है, जैसे आपने बोला कि 5 आउट ऑफ 5 विन, जो कि आई थिंक अभी तक बेस्ट है। सो उस सेंस में मेरे को नहीं लगता कि एकदम से, मतलब नो डाउट रेड अलार्म था आपके लिए कि भाई आपने एफसी कप से एलिमिनेट हो गए इतनी बढ़िया टीम के साथ। लेकिन आपको लगता है कि मतलब जो सिचुएशन क्रिएट हुआ आफ्टर दी ओडिशा एफसी, वो थोड़ा-सा फैन इतना बड़ा है, मतलब हमको पता ही है कि कोलकाता बेस्ड क्लब के लिए एक हमेशा से रहता है प्रेशर, सारी चीज़ें। तो उससे ज़्यादा हाइप्ड अप था, या फिर आपको लगता है कि रियल नहीं, क्लब में भी एज़ ए टीम लेवल पे, कोचेस लेवल पे भी थोड़ा-सा वो इश्यू चल रहा है कि जॉन फर्नांडो इस लेवल की टीम को हैंडल नहीं कर पाए। व्हाट्स योर थॉट अबाउट अभी तक जिस तरह से मोहन बगान किया है आईएसएल या फिर एएफसी कप, दोनों को लेके देखे तो? I think there are 2 or 3 facts coming together over here. One thing is that if you look at the results in the ISL, despite what Mohun Bagan has played, you have won 4 matches so far. You could be winning your 5th now. So from that perspective, I would say very, very important for you as a team. But your ownership had said, we are targeting to win the AFC Cup. And so in that way, that conversation was happening, that pressure was building, and they were not able to achieve that. After match day 5, they're out of the competition. Odisha and Basundhara Kings now play sort of in an indirect final for the South Asian zone. And that's a failure. So from that perspective, it's an issue. In the ISL, you've done everything right so far. If you are able to win against Jamshedpur away in a match where Jamshedpur I felt was better, even now you're winning 1-0, you nearly scored a second. You're fine. 5 out of 5 is a rare track record that any team will have in the ISL. But again, there's pressure, there's tension. If you see the fans, yes, scored second. Ashish Rai scored a beautiful goal, sir. Sorry to interrupt. Yeah. But Ashish just scored a second, and Ashish puts up his hands. He's an ex-Hyderabad player. So that's game, set, and match after 95 minutes, which means 5 out of 5. So in that aspect, I feel that
they've done it right, because this was a tough game. Hyderabad again had their moments, um, but Mohun Bagan has the quality. They are one of the best teams in this league. And for Hyderabad, again, the bottom of the table, they're struggling a lot. There's a lot of stuff happening in and around the club. You've had FIFA bans. There's been talk ongoing of an investor coming in, which has not happened. Your foreigners this season are not clicking. Let's be honest about it. I think the foreigners in the last 2 years were very, very influential. Batuk Beche is no longer there, and O'Day has gone to Goa. Not to forget Manolo Marquez as a coach, and that's it's an interesting scenario, and it's interesting to see Ashish Rai, who's back in the team, to score a goal against his former club, another of those players who Manolo Marquez has built at Hyderabad FC, and it was clear from the onset that Hyderabad would have a problem this season. बट एक सर चीज़ जो हमने देखी है हैदराबाद के साथ, इस मैच का भी परफॉर्मेंस अगर आप ले लें, तो आई थिंक कंप्लीटली एग्री विथ यू रिगार्डिंग द फॉरेनर्स। आई थिंक जावा विक्टर जो उनके मतलब लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने अच्छा किया है आज। आई थिंक उसका गेम मेरे को बेटर लगा। बट पीटर पेनेनन या फिर जो नोवेल्स को हमने फर्स्ट हाफ में देखा, एक तो ओपन हेडर मिला था, उसके बाद भी एक चांस मिला था, उन्होंने वाइड हिट कर दिया, जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके जो फॉरेन प्लेयर्स है, चाहे स्ट्राइकर हो उनसे, कि वो उस तरह के जो चांसेस है उसको फिनिश करें। एंड आई थिंक थ्रू आउट दिस सीजन मतलब जितने भी उन्होंने 5-6-7 मैचेस खेले हैं, उसमें दिखा है कि उनके जो फॉरेनर्स है उस तरह से बिल्कुल मतलब क्लिक नहीं हो रहे हैं। एंड आई थिंक मैचेस भी जो उन्होंने हारे, वो काफी कुछ मैचेस काफी कम मार्जिन से हारे, 1-0 से 2-3 मैचेस हारे हैं। सो आफ्टर दिस होल मेस अप रिगार्डिंग दिस सैलरी इश्यू की सैलरी टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि मतलब जो फॉरेन प्लेयर्स है वो मतलब जिस क्वालिटी के चाहिए आपको नहीं मिल पाए, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। Those are factors, and also Manolo got the maximum out of the Indian players also, no? तुम्हारा हितेश शर्मा, साहिल तवोरा, साना, निमदोरजी, Nikhil Pujari, these are all players who are playing at the maximum of their potential. Again, Ashish Rai has now moved on. And so from that point, I think it's a very very difficult one now for Hyderabad, because they have to rebuild after this. The question is, in what state is the club to be able to rebuild? What can you do? And final whistle, 2-0 Mohun Bagan. Also, this whole thing about your coach doesn't have the license, so your technical director becomes assistant coach, is sitting in there. All of this does not look good. Hyderabad does not look like the team that they were in the last 2 years, where they won the ISL. They were fighting for the title last season, and it's just sad to see a team that has done so well, that they are in the position that they are in. And again, on Mohun Bagan, congratulations. It's good to see them back in winning ways, because for them it's very, very important as a team, because otherwise, if they're drawn today, or even in the worst case lost today, and Joe Victor still is very, very unhappy with the referee. Just telling the fourth official a few things. That for Mohun Bagan, this is important to get their season back on track, because this AFC Cup loss could have derailed their season. If they've again drawn today, lost today, the pressure would have built even further on Juan. Now you won it, you've reduced a little pressure on yourself, so therefore they can focus on the upcoming matches. हेलो परमेश्वर नायक भाई, हेलो जयंत भाई, बिल्कुल भाई, अमल साजी भाई बोल रहे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वही डिस्कस कर रहे हैं भाई। हैदराबाद में स्पोर्टिंग वाइज भी काफी ज्यादा दिक्कतें चल रही है, जैसे सर ने बोला कि आपका स्पोर्टिंग डायरेक्टर, कोच, दोनों सारी चीजें मिक्सअप है। प्लेयर्स जैसे हमने बोला, फॉरेन प्लेयर्स आर नॉट क्लिकिंग अप, एंड इंडियन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस भी जो मनोलो मार्केस के अंडर आ रहा था, वो यहाँ पे अभी सेम लेवल पे रिपीट नहीं होता, वो दिख रहा। फाइनेंशियली दे आर स्ट्रगलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज दे आर स्ट्रगलिंग, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे हैदराबाद एफसी के लिए अभी सही नहीं चल रही है। सो वो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा एक चीज मैं आज के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं मोहन बगान के, तो कियान नसीरी को आज स्टार्ट मिला था, जो कि काफी लंबे टाइम से फैंस एक्सपेक्ट कर मतलब फैंस की डिमांड थी कि भाई उनको मौका मिलना चाहिए। बट जिस तरह की फॉरवर्ड लाइन यहाँ पे मोहन बगान की है, उसमें मतलब काफी मुश्किल था। लेकिन लास्ट मैच में भी एज ए सब्स्टिट्यूशन जिस तरह से उन्होंने इंपैक्ट डाला, इस मैच में भी जिस तरह से खेला, व्हाट्स योर थॉट अबाउट दी कियान नसीरी? आई थिंक काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगे हैं।
Kian needs match time. I think that's the most important thing for Kian, a player of his age. Again, he has a lot of potential. You saw that the other day, fighting spirit in the AFC Cup. He scored a very, very good headed goal. But he needs time. Kian needs time and he needs match time at this level as much as possible. But your front line is Cummings, Sadiku, Petratos. You are striker number 4. Sahil Bhatt is striker number 5. So that's, Hmm. that's something. You played with 2 defenders today. That's why you were forced to play an Indian striker, so to say. Mandir Hmm. Singh is also in the mix. So therefore, Juan Fernando has played around a bit. And of course, Kian played well in the AFC Cup. That's why he started today. I think he deserved to start today. Hmm. Yeah, but again, it's not a one match wonder that Kian will turn things around. He needs match time, he needs minutes, and hopefully he'll become better and more impactful. जेसन क्यूमिंग्स हैज बीन द वर्स्ट। देखिए जेसन क्यूमिंग्स भाई विनीत सिंह भाई, उनका और अरमांदो पर्टिकुलरली आई थिंक जेसन क्यूमिंग्स को कंपैरेटिवली अरमांदो सादिक से ज्यादा गेम टाइम मिला है, लेकिन कंप्लीटली एग्री ऑन दैट कि भाई जिस तरह से उनको चांस आज भी आई थिंक एक एक दो आई थिंक उनको चांस मिले थे उस तरह से, मतलब आपको सर क्या लगता है कि जिस तरह से वो ए लीग में परफॉर्मेंस दे रहे थे उस ऑब्वियसली यहाँ पे नई लीग में टाइम लगता है सेटल डाउन होने में, लेकिन what's your first assessment of the Jason Ewing after the 5 matches in ISL and couple of matches in AFC Cup? आपको क्या लगता है कि did right choice made by the, मतलब it's a success signing or failure sign at this moment? It is too early to say. It's 3-4 months in. The season is still on. Jason Cummings has already scored some goals, but again, he's not gonna. He doesn't seem to be a striker who's gonna score you 25, 30 goals. So therefore, I think that'll take time. And on the other side, Sadiku is not an out-and-out striker; is more of a winger. Um, Again, the question can be asked about the management and the coach. Did you choose the right players for your team? Is Jason Cummings really worth the money that you're paying for him? Because nobody else wanted to pay as much as you paid him in the end. Um, yeah. So therefore, I would think that wait a little more. Let's see if he does it. We had the same issue last season about Florentine Pogba, who just could not settle into India, and injury. There's that everything. And Florentine Pogba is someone who's a quality. Sorry, I just got lost. Florentine Pogba was a player who's got a good reputation in the Ligue 1 system. Hmm. आई थिंक सर का फ्रीज हो चुका है। अनिरूप मंडल का हम कमेंट ले लेते हैं। कंसीडरिंग द नंबर ऑफ प्लेयर्स आउट ड्यू टू इंजरी, आई थिंक मोहन बगान प्लेड वेल टुडे, एनी अदर टीम वुड हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू फील्ड अ गुड टीम। एक कंप्लीटली एग्री, आई थिंक जिस तरह की इंजरी के साथ वो स्ट्रगल कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमें अनिरूप मंडल का यहाँ पे सॉरी मोहन बगान का हमें काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला है कंपेरेटिवली। सो हेयर बेटर देन अरमांडो। ओके कल्याण, इसके अलावा व्हाट मोर आशीष राय नीड्स टू डू बी इन नेशनल टीम। देखिए विनीत सिंह भाई, आज आशीष राय ने नो डाउट अच्छा किया है, लेकिन लेट्स सी कि क्या उसको अभी रेगुलरली बेसिस पे जब अनोरली की वापसी होती है तब क्या वो उसको फिर से रेगुलर गेम टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। सर मैं एक एक कमेंट जानना चाहूंगा आपका रिगार्डिंग दी जॉन फर्नांडो सिचुएशन, क्योंकि काफी सारे लोग जब एफसी कप का लॉस हुआ उसके बाद उससे खुश नहीं थे फैंस, एंड एक वो भी एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि भाई उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। व्हाट इज द सिचुएशन रिगार्डिंग जॉन फर्नांडोस फ्यूचर एट मोहन बगान? At the moment, his future is secure until the end of the ISL at the end of the year. I think he's there till end of December, and I Hmm. think the results over the month of December will decide if Juan Fernando will stay or if they might replace him. So therefore, at the moment he's staying. I know the fans are not happy with him. The fans are not happy with Cummings Sadiku. So therefore, again, the management has to take a call, has to make a decision. I think the management also, to some extent, has to take a blame for the failure of the team in the AFC Cup. So therefore, But maybe I ISL think things are fine. but I think in FC Cup it's I think fourth time they are failed to got into the fourth or third time. I think last.
I think 2021-22 maybe. This is their fourth campaign, na? Straight. Yeah, but they last time around they were was it last year or the year before where they got beaten by NASA heavily? Uh, I think last time they beaten by the Malaysian club. I think No, Kuala Lumpur. Yeah, Kuala Lumpur City. Yeah, and the year before it City. was NASA, but that was in the Nasaf. playoffs. That was in the Uh, playoffs. So hmm, so from that perspective, um, not ideal, not perfect. But again, this year they wanted to push, and yeah, they haven't been able to. So therefore, from that perspective, that's a failure. But in the ISL, 5 matches played, 5 wins. Yeah, you are third in the table. You've played less matches than the teams above you, so therefore everything is fine. I think Hyderabad on the other side has a problem. You're bottom of the table, hmm. and it's going to be one will have to see um, how the team performs if Juan Fernando can sort out things internally. It's a huge challenge. Regarding just you mentioned about the Sadiku and Cummings and fans are not happy. मेरे को तो लगता है कि either मतलब most probably I think Sadiku will leave in January. What's your thought about that? क्योंकि there is a rumors I regarding Johnny I Koku, don't know. I don't know what or any defensive midfielder. again they will have to look at defensive midfield. I think they need a foreigner, Hmm. and for them, it's a question of how do you structure your team. Is Anwar going to be back in January? Is he going to be fit again to be back for the remainder of the ISL? That's your first question. If Anwar is not back, how are you setting up your defense? Because today you Hmm. played with two centre backs, foreign centre backs. Hmm. So there are different issues over there which one has to see, and the question is how will they manage those issues, defensive issues, because depending on your defensive issues, you're also gonna play a x number of foreigners, either 2 or 3. Hmm. So therefore, that's the other mix. Think so. पार्था प्रतिम गांगुली बोल रहे कि सुहेल प्लस कियान is greater than Cummings plus Sadiku. If our club given chance to one foreign striker plus one domestic striker, it will be beneficial for Indian national team and club also. ओके भाई, टॉक अबाउट सोहेर बट भाई डेफिनेटली मतलब आप जैसे अभी हमने बात की कि जिस तरह की कंपटीशन है मोहन बगान में स्ट्राइकर की, सोहेल बट विल कम एज ए सर ने जैसे बोला फिफ्थ चॉइस. So that's the difficult part for him to get the minutes in the ISL. Either he looks for another club, or that's the only possible solution for the right now to get the time, match time. लिविंग कार्ल मैक्यू फॉर फ्री वाज नॉट गुड. मेरे हिसाब से भी जो कार्ल मैक्यू का जो आई थिंक जाना था, आई थिंक दैट वाज अ नॉट राइट चॉइस, आई वुड से. सुहेर इज गुड बट ही इज गुड कीप ओके भाई. मोहन बगान फिनिशिंग डजंट लुक गुड. दैट्स मतलब एग्री कि सहल सहल को भी फर्स्ट हाफ में Suhair उसे is too much of a hype. Why? I feel हाइप. Suhair is too much of a hype. Kian Suhair. Again, if I look at you're talking about Cummings and Sadiku, you're forgetting Petratros, all of you. Dimitri हाँ. Petratros for me is a consistent. If he's fit, he is a starter for Mohun Bagan, and he's delivered last season a title. That is Hmm. what that is what people are forgetting. So if they have the opportunity to play foreign strikers, they will start with foreign strikers. And Juan Fernando or no other ISL manager thinks about, oh, you know what, I need to play an Indian striker because it's going to be good for the national team. Nobody's going to do that. Hmm. They will look at their own team. They will look at their own results. They don't care. Yeah. So Hmm. therefore, that's the thing. No, Dimi Petratos, also Manvir, those two guys missing in an attacking line is a big loss even for a team for like Mohun Bagan, because Cummings and Sadiku are, in my opinion, still not settled in Mohun Bagan and in India. I don't know. They're not playing their natural game. If you look at if you look at Cummings in the first half, if you look at Sadiku in the second half, it didn't look natural to me the way they played, right? And they're quality players. So let's see if they can turn things around and can improve themselves. शिवादित्य बोस बोल रहे कि मार्क जोथनपुया इज अ प्लेयर टू वॉच आउट. डेफिनेटली भाई. विघ्नेश दक्षिणामूर्ति के ऊपर उनको चुना गया, जो कि इस सीजन मुंबई सिटी से आए हैं.
सो डेफिनेटली अ प्लेयर टू वॉच आउट। उसके अलावा सर एक एक चीज आई थिंक लास्ट पॉइंट ऑन दिस मैच हैदराबाद वर्सेस मोहन बगान, जो मतलब जिस तरह का प्रेशर आई थिंक जॉन फर्नांडो के ऊपर था, आई थिंक इस विन के साथ थोड़ा सा तो रिलीव जरूर हुए होंगे वो। एंड नो डाउट जो नेक्स्ट मैच है वो भी फिर से ओडिशा एफसी के सामने है, लेकिन इस बार होम पे है, सोल्ट लेक में। सो आपको क्या लगता है कि क्या वो मतलब जो अभी थोड़ा सा वो एक क्या बोलते हैं कि तूफान की तरह वो आया था कि भाई चेक करो जोरन फर्नांडो को, वो आई थिंक अब थोड़ा सा मेरे को लगता है कि काम डाउन होगा इस विन के साथ। I don't think so. I think that the fans and their opinions are quite harsh on this. हम्म And Kolkata again, look at East Bengal. No, they're already saying, "Na, Carlos Kodrat, kya hai? Why? Get sack हाँ him, get rid of him." So therefore, that is not over. This AFC Cup exit of Mohun Bagan is something which is a huge thing against the psyche of Mohun Bagan and the expectations of Mohun Bagan Super Giant. So हम्म that is, I think, the more important thing. And the thing is, you can lose matches. A club like हम्म Mohun Bagan does not lose with 5 goals. That's the other problem that Juan Fernando हाँ has. हाँ, ये भी है। So that's the challenge. No? So again, they have a very good team in regard to names. They have the most expensive squad in the league, but do they have a team really? The squad on paper looks good, हम्म but they have to prove that they are good as a team. Because today they won because of the qualities of their players. I mean, Brandon Hamill, your centre back, actually scores your key goal today, की right? गोल हाँ। हम्म So that's also a sign of things, right? And that's yeah. परमेश्वर भाई बोल रहे कि फैंस आर ओवर रिएक्टिंग अबाउट सेकिंग जुआन, इट्स जस्ट दैट प्लेयर्स डिड नॉट परफॉर्म वेल अगेंस्ट ओडिशा। ओके, ओडिशा होम पे आके हरा दे तो ये हिरल भाई का है भाई, फिर भाई थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं कि इसको और भी ज्यादा वो होगा प्रेशर। It's एंड it's building. It's not a one-off. हाँ This has been हाँ building for a while. People, it's the म- same thing as with in Bangalore with Simon हम्म Grayson. Fans are not हम्म happy with the coach. Fans हम्म are not happy the way their team are playing, and that's again it yeah that's the thing. No? That's the thing which is in it's not working for them, and with the potential they have, they should be better, and that's the only हम्म। problem. But today, again, they showed their class in a way that the players do possess, and that's why they won the game. की पॉइंट्स में आई थिंक एक थोड़ा मैच के बारे में बात करें तो आई थिंक वो जो लिस्टन कोलासो का वो एक फ्री किक था जो पोस्ट पे हिट किया, सहल को फर्स्ट हाफ में वो चांस मिला था जहाँ पे गुरमीत सिंह का बेहतरीन सेव था। सेकंड हाफ में आई थिंक थोड़ा सा और भी ज्यादा अटैकिंग लगी मोहन बगान, एंड चांसेस भी ज्यादा मेरे को लगता है कि सेकंड हाफ में क्रिएट किए, एंड फाइनली दे successfully able to score those two goals. Let's move on to the big match which is tomorrow, and that will decide table topper. And it's a FC Goa versus Kerala Blaster, sir. Jalen Patoda, full house. What's your expectation? How do you see this match? And who are the favorites? It's FC Goa for me who go in as favorites because Goa play at home. I think whoever plays at home would be a favorite in this matchup. If the Blasters were playing at home, the Blasters would be the favorites. And yeah, I think Manolo Marquez brings with him something which is very special. The players, the quality that this team has. But the good thing is to see pre-match, the respect that Manolo has for Ivan. Ivan has a lot of respect for Manolo, and they both deserve a lot of respect. They've done well with their teams. But I think that FC Goa has a little bit more quality than the Blasters, and that will most probably be on show tomorrow. विपुल चौधरी बोल रहे कि अरुणा सर, वुड यू लाइक टू कोच मोहन बगान? I'm no coach, so therefore हाँ the question doesn't arise for me. ओके, रोशन जीके जी, हेलो भाई। हैदराबाद वाज आल्सो नॉट हार्मफुल इनफ इन फ्रंट ऑफ द गोल। एग्जैक्टली भाई, दैट्स द पॉइंट कि जो नोवेल्स एंड जिस तरह की मतलब उनसे एक्सपेक्टेशन है उस तरह से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए।
इमरान अली बोल रहे व्हेन आसिक कम बैक लिस्टन आउट। देखिए आसिक कुरुनियान को एसीएल इंजरी हुआ है, सो उसके बाद किस तरह से वो रिकवर करता है, किस फॉर्म के साथ आता है, किस रिदम के साथ, वो डिसाइड करेगा कि उनके स्टार्टिंग 11 में जगह बनेगी कि नहीं। हाउ कम मोहन बगान विंस एवरीथिंग इन आईएसएल बट डोंट परफॉर्म इन एएफसी कप, दैट्स अ टू डिफरेंट लेवल ऑफ टूर्नामेंट वो अनविद भाई। मान लो लेट्स गो ओके। मैं सर एक जानना चाहता था केरला ब्लास्टर के रिगार्डिंग कि जब उनके 3-4 की प्लेयर जो बैकलाइन में थे, जो इंजर्ड हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की केरला ब्लास्टर ने परफॉर्मेंस दिखाई, तो वो आई थिंक कहीं न कहीं जो इस बार आई थिंक जैसे आपने बोला मनोलो मार्केस ने भी ये मेंशन किया थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस कि की प्लेयर की एब्सेंस में भी उन्होंने वो कैरेक्टर दिखाया जो कि इवान वुकोनोविच ने इंस्टिल किया है। सो वो कितना यहाँ पे फैक्टर इन होगा, क्योंकि हमने देखा कि जो होम पे तो आई थिंक नो डाउट क्राउड का सपोर्ट और वो सारी चीजें मिलता है केरला ब्लास्टर को, लेकिन अवे में भी इस बार उन्होंने दिखाया है कि दे कैन विन अवे मैचेस। सो हाउ डू यू सी दैट फैक्टर कि अब क्योंकि आई थिंक फुल्ली फिट स्क्वाड भी वापस आ चुकी है उनके लिए सिवाय की जिक्सन। See, the point for the Blasters is to find the right squad in an away game. Because in the last match, Hormipam, again, last match against Chennai, you nearly lost because the coach did a rotation. रोटेशन Hormipam didn't एग्जैक्टली। have his best matches. Drintage had his problems. Probir was shaky at times. So therefore, the question is, which is your best back line? I think that's the first question that Vukomanovic will ask himself. So I guess Pritham Kotal will be coming back in some form, either as a centre back or as a right back into the starting 11. Then you talk about your defensive midfield, which the other day didn't have that much of sort of control. Danish Farouk and Vipin were not as good as they have been. But again, it's a question, right? It in the end, it saved you that you had Luna, you had Pepra, and you had Diamantakos. दिमांतकोस। So those players in attack were brilliant for the Blasters, especially Pepra's and Diamantakos' long range goals, just lovely to see. And so that's that. So therefore, again, how is your team composition? How are you going to form your backline, your defensive midfield is going to be very, very important, because on the other side, you have a very, very potent unit at FC Goa, led by Noah Sadui. Again, interesting to see if Martinez is going to play or not, but you have options over there. So therefore, that's going to be the real test, because I think that the Goa defensive line is a little bit more settled, where you have Uday, you have Sandesh, you have one of the positive surprises of the season in Jay Gupta. Sheraton is there. So yeah, the backline of Goa looks a little bit more settled to me. And of course, not to forget, other players as well. Rahul and Borges, for example, who's actually had a good start with FC Goa. अनविथ बाय टू डिफरेंट लेवल्स इन अ सेंस कि आप देखिए कि उनका जो परफॉर्मेंस है मतलब एएफसी कप में एंड आईएसएल में, आप देखिए कि ओडिशा एफसी नो डाउट आईएसएल की टीम है, लेकिन उस दिन मतलब टोटली आप जो भी चीजें हैं, प्लेयर का परफॉर्मेंस बोल लीजिए या फिर कोच का टैक्टिक्स बोल लीजिए, कुछ चीजें वर्क नहीं की उनके लिए एंड दैट्स व्हाई 5-2 का रिजल्ट हमें देखने को मिला। अब नेक्स्ट मैच आप देखिएगा ओडिशा एफसी के सामने आईएसएल में ही है, तो वहां पे आपको मोहन बगान बेटर दिख सकती है ये वाली चीज़ें एंड मैं ये एग्री करता हूँ कि नो डाउट ये यहाँ पे उज़्बेकिस्तान या फिर उनके क्लब नहीं है। लेकिन बांग्लादेश का अगर आप वसुंधरा किंग्स भी देखें, तो आप उसको कोई किसी आईएसएल लेवल के क्लब से कम भी नहीं मा आँक सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि बांग्लादेश का क्लब है तो आईएसएल के क्लब से मतलब आईएसएल का लोअर लेवल क्लब है उनसे भी नीचे होगा। दे आर टॉप लेवल क्लब भाई। चाहे बांग्लादेश और वो कंप्लीटली मतलब मेरे को तो लगता है कि आईएसएल के लिए परफेक्ट वो है कि आईएसएल में भी वो खेल सकते हैं और मालदीव्स का भी अगर आप माज़िया भी देखें, तो उनका भी वही परफॉर्मेंस आप देखें तो अच्छा रहा है, सो वाली बात है। दू एक चीज़ जो केरला ब्लास्टर में हमें मतलब अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि व्हाट विल बी योर सेंटर बैक पेयर फॉर दिस मैच अगेंस्ट एफसी गोवा? Um, it's a good question, because if you look at the centre back pairings of the Blasters, they've had quite a few pairings. That last match you had Drintrich and Homipam. You've had Leskovic in the back of your hand, who was your key centre back last season. Homipam was very, very strong last season, but has been shaky against Chennai. And on the other side, Pritham Kotal has played quite well as a centre back or as a right back. So therefore, you have options. You have options. The question is, what does Vukomanovic think? What's the right way? Because again, in the last game,
his defensive unit आई थिंक सर का कनेक्शन फिर से थोड़ा सा लॉस्ट हो चुका है। 24-25 एफसी चैंपियंस लीग 2 और 23-24 एफसी कप विच लीग डिफरेंस? देखिए 24-25 से जो एफसी चैंपियंस लीग एलिट और एसीएल 2 होगा, और डिफरेंस भाई है उसमें, क्योंकि उसमें 24 टीमें कर दी है। विनीत सिंह बोल रहे कि लेस्कोविच एंड रिंसिक, आई थिंक दोनों फॉरेन सेंटर बैक तो मैं नहीं देख रहा हूँ। फिर आपको मतलब क्या बोलते हैं कि पेपरे को ड्रॉप करना पड़ेगा, जो कि मेरे को अभी तो नहीं लग रहा कि दैट विल बी द केस। आई थिंक लूना, पेपरे एंड दिमांतकोस तो खेलेंगे ही खेलेंगे। सो दोनों फॉरेन सेंटर बैक का ऑप्शन मैं अभी तो नहीं कंसीडर कर रहा। आई थिंक आइदर इट विल बी ऑर्मीपाम और प्रीतम कोटाल विल ए कंपनी द्रिंसिक। लूना एंड दिमांतकोस अप फ्रंट, ओके। ईशान पंडित अबो पेपरे। आई थिंक जो पेपरे की क्वालिटी है, आई डोंट थिंक सो कि इवान वुकोनोविच विल बेंच हिम। दूसरा एक सर एफसी गोवा में आई थिंक जो डिसीजन है वो है रिगार्डिंग द राइट विंग, दैट बोरिस सिंह एंड उदांता सिंह। वहां पे भी आई थिंक अभी पिछले 2-3 मैच में मैंने देखा है कि बोरिस सिंह को भी स्टार्ट मिला है। सो व्हाट्स योर थॉट अबाउट दैट? he has options. I think that's a good thing that every coach is happy about. When in certain positions he has options, and he has two players who are of a similar level quality. Udanta is no longer as good as he was maybe 3-4 years ago. We have to be honest about that. Also, Boris, I've seen a stronger Boris as a young 14, 15, 16-year-old with the Indian junior setup when he was part of the under 17 setup. But at the moment, Boris looks to me better than Udanta. Udanta looks to me a 20-minute player. So I guess he would most probably look at starting with Udanta. वेरी स्पोर्ट खबरी भाई, ये स्पोर्ट खबरी ही है भाई, दीपक दास भाई। और अनफॉर्चुनेटली हमारे 2-3 साथी आज मिस कर रहे हैं। उदांता इज मोर लाइक अ गुड रनर, कैन यूज हिज पेस इन सेकंड हाफ। एग्जैक्टली भाई, आई थिंक जैसे सर ने बोला 20-30 मिनट का प्लेयर है वो, जो अभी आई थिंक नेशनल टीम में भी उसी तरह से उसको यूज किया जा रहा है रादर देन स्टार्टिंग 11 प्लेयर ऑब्वियसली। सो सर, योर फाइनल थॉट अबाउट दिस मैच एंड योर प्रेडिक्शन अबाउट एफसी गोवा वर्सेस केरला ब्लास्टर, बिग मैच, table topper and houseful? First of all, it's good that there will be a great atmosphere at the Fatorda in Goa tomorrow night. So that's the first positive. Huge interest amongst the fans. Of course, it's the top of the table clash, but again, do not forget that the other teams have played less matches behind them. So therefore, I would think that Goa will win 3-1. 3-1, okay, bold prediction, 3-1, very good. मेहरबान भाई जुड़े हमारे साथ टुडे, हैप्पी टू सी इंडियन What's फॉर। yours? हाँ बोले बोले। What's your prediction? My prediction, मतलब एफसी गोवा नो डाउट एट होम प्लेइंग आवर फेवरेट्स, बट I would go with 2-2 draw. I am seeing a 2-2 draw. Acha. हाँ, मतलब हाई गोल स्कोरिंग मैच होगा, ऐसा नहीं होगा कि इट विल बी क्या बोलते कि पूरा वो एकदम 1-0 टाइप। गुड डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच परमेश्वर नायक भाई। व्हेन वाज जेसन क्यूमिंग्स पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया नेशनल टीम? ये भाई वर्ल्ड कप के दौरान थे, उसके बाद आई थिंक उसको सिलेक्शन नहीं हुआ है। हैप्पी टू सी इंडियन फॉरवर्ड्स प्ले इन मोहन बगान, सोहेल लुक्स रियली गुड आल्सो कियान। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल भाई। सो आई थिंक एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग, आई थिंक मुंबई सिटी एफसी कोच के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे भाई, अभी तक भाई उसका नाम निकल के नहीं आ रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा हमें। एंड लेट्स सी कौन यहाँ पे जो नए हेड कोच है वो मुंबई सिटी के टेक ओवर करते हैं मुंबई सिटी को। एंड उनका भी आई थिंक सर इंटरेस्टिंग रहेगा आफ्टर दी देश बकिंगम, हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म इन आईएसएल। चलो चैंपियंस लीग में तो जो होना है वो होगा, लेकिन आईएसएल में क्या वो इस तरह मोमेंटम है वो मतलब कंटिन्यू रख पाते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग उनको भी सेम तरीके से ही जज करते हैं। जैसे मोहन बगान का एफसी कप में बाहर हो गए, तो वो बोल रहे कि इस बार तो मोहन बगान कुछ है, मतलब जो जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम ही खेले हैं। तो सेम गोज फॉर दी मुंबई सिटी ऑल्सो, कि उनसे भी मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि भाई चैंपियंस लीग में एक आध गोल मारेंगे, मैच जीतेंगे, लेकिन चलो वो तो नहीं हो पाया। लेकिन आईएसएल में उतना बुरा नहीं किया है अभी तक जितना भी खेले हैं। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग सा होगा कि आफ्टर द देश बकिंगम गोन, हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म इन आईएसएल। It's a challenge. It's a challenge for Mumbai City in the coming matches. But again, they have the quality. They have a setup. They have a structure. So that's the big advantage.
for Mumbai City, and whoever the new coach is, I think he will not change too much at the start. Keep certain things that Des has created, and build on it. And then whenever he gets a break chance to work on it, let's see what they do. The Mumbai City still has a very good squad and a potent squad to fight for the title in the ISL. The Champions League is just, the standard was too high. Let's be honest. This was Hmm. Al Hilal Nahor, even Asaji was at least one, if not two levels higher than what our Indian clubs can play. सो यहाँ तक रखते हैं गाइस, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड एंड मिलते हैं कल आफ्टर द मैच डिस्कशन ऑफ एफसी गोवा वर्सेस केरला ब्लास्टर. इंटरेस्टिंग मैच है गाइस, जरूर देखिएगा, मजा आएगा. आई थिंक इट विल बी अ रियली क्लोज फाइट. एंड जिस तरह से इस सीजन आईएसएल आई लीग दोनों आई थिंक जिस तरह से हो रहे हैं, आई थिंक काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रही है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द सीजन में हमने बोला था कि मोहन बगान मुंबई सिटी आर क्लियर फेवरेट्स फॉर द टाइटल. बट धीरे धीरे एफसी गोवा की एंट्री हुई, अब केरला ब्लास्टर भी वहां पे कंटेंशन में है, ओडिशा एफसी भी धीरे धीरे मतलब क्या बोलती कि वो करती जा रही है. तो 4-5 टीम्स आर इन द मिक्स कि जो यहाँ पे शील्ड विनर बन सकती है. सो दिस सीजन इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग आईएसएल. सो जरूर देखिएगा कल का मैच एंड फिर कल मिलते हैं. प्लीज डू गाइस check out to SportsKhabri, Curiosity, arunfoot and Indian Food and Football, and like and subscribe जरूर कीजिए. मिलते हैं कल. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. टेक केयर. बाय बाय. जय हिंद. जय भारत. Good night.